class, I told you there are 4 sectors in an economy: AD in 4 sector, 3 sector, 2 sector, and we developed a model around 2 sector AD, which is C plus I. Your AD function become A bar plus CY, small cy. Your AS is equals to Y. Equilibrium is attained where AD equals to AS. The equilibrium output or income level was 1 upon 1 minus C into A bar. A bar is nothing but the sum of all autonomous variable, that is C bar plus I bar. Then I told you about investment multiplier, which we denote by alpha I bar, which is change in income due to change in investment, and the formula of investment multiplier was 1 upon 1 minus small c, which is MPC. I hope this much is clear to you about two sector, that is its equilibrium and multiplier. Yes or no? Yes. Okay. Now, now, uh, let me derive a AD curve for you. Let me derive AD curve for you. Let me derive investment curve for you. I will start with investment curve today. Give me a minute. Open the book. Okay. Now, let's talk about, Abhi, don't worry about this graph. Let me talk you about AD and AS in 3 sectors. Okay. Give me some space. Yes. Now, please. 3 sector model. अभी तक आपने 2 sector model पढ़ा है. Let's start with 3 sector model. 3 sector model of goods market. बच्चों, I hope you know that there is a difference between income and disposable income. What is the difference between income and disposable income? Can anyone tell me? सर डिस्पोजेबल इनकम लाइक जो आप स्पेंड कर सकते हो, खर्च कर सकते हो. हाँ, नेट इनकम. इनकम आफ्टर टैक्सेस. Income after taxes. And when I say tax, it is net tax. It is net tax. Net tax बोले तो tax minus transfer. Tax minus transfer. अगर हम income में से, supposingly my income is 10,000 and government impose tax of, let's say government impose tax of 1,000 rupee on me. गवर्नमेंट ने 1,000 रुपए का टैक्स लगाया and they give me a subsidy or transfer of rupees 500. So the net tax become what?
net tax become 1500. 1000 minus 500, that is 500. एक और ये टेंडेंसी है, मैं बता दूं आपको, मुझे सब स्ट्रेटेजी पता है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, क्लास ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि उनको परमिशन मिल गई, फिर उसके बाद उसको लेफ्ट कर देंगे एंड देन ज्वाइन करेंगे जस्ट बिफोर अटेंडेंस। मुझे वो बच्चे मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट मैं ध्यान रखूंगा उस चीज का इन सम ऑफ द अदर वे। तो ये चालाकी मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। एनीवे अगर नहीं सीखोगे तो मार्क्स ही नहीं आएंगे। खैर, तो योर डिस्पोजेबल इनकम बिकम इनकम माइनस टैक्स, दैट टैक्स इज नेट टैक्स। तो 10,000 minus 500, it become 9,500. This is your disposable income. So what is disposable income? Income minus taxes. Income minus taxes. And when I say tax, it is a net tax. Okay. Now, so your consumption is now C bar plus autonomous consumption plus small c y small c y d. yd is your disposable income. yd is your disposable income. मतलब your consumption is not depend upon your income, rather it depends upon your disposable income. Yes, देखो, एक मेरी सैलरी है, ठीक है, एक वो सैलरी है मेरी जो अकाउंट में आती है। तो मैं कितनी कंजम्पशन करता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आते हैं, क्योंकि दैट इज माय अल्टीमेटली स्पेंडेबल इनकम। तो माय कंजम्पशन बेसिकली is not a function of income, rather it is a function of disposable income. Sir, earlier in two sector model we were writing consumption is a function of income, but now we are writing consumption is a function of disposable income. How come? Because in three sector we include government, and with government this new factor came in the picture, that is taxes and transfer. तो जब गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट आने से टैक्सेस एंड ट्रांसफर आ गई, तो ट्रांसफर और टैक्सेस आने से क्या हुआ, इनकम नहीं रही, डिस्पोजेबल इनकम हो गई। यस और नो? यस और नो? यस। ओके, मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको कि डिस्पोजेबल इनकम क्यों लिखा हमने। सी इज सी बार प्लस स्मॉल सी। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, मैंने बताया इनकम माइनस टैक्सेस, इनकम माइनस टैक्सेस, हाँ या ना? इनकम माइनस टैक्सेस। ओके, and your taxes we take as proportionate income taxes. Proportionate income taxes, that is the some portion of tax. Supposedly your tax is 10% of your income. Suppose your tax is 10% of your income. So how will you write it in fractional form? So your tax is small t y, that is 0.10 of your income. So मैंने टैक्स को क्या लिख दिया, टी वाई, स्मॉल टी वाई, where t is your tax rate. Am I clear to you on this? Yes? Yes, sir. Can I take y as common? Yes, sir. So it become this. Your consumption function become this. Yes? Yes, sir. ये पहली चीज है जिसमें बदलाव आया है थ्री सेक्टर की वजह से। दूसरी चीज ये तुमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, ये रॉकेट साइंस है, ये लास्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हो आप, मैक्रो में जब पढ़ के आए हो, ठीक है। अब क्या हुआ है, तो ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा था, आई नो कि क्या पढ़ा होगा आपने लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में मैंने बाकियों को भी पढ़ाया ऐसे। नाउ आपके इन्वेस्टमेंट में भी अब चेंज आया है, हम इन्वेस्टमेंट को हम लिख रहे हैं आई बार तो लिख ही रहे हैं, माइनस बी आई भी लिख रहे हैं। मतलब योर इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली हैज ऑटोनोमस कंपोनेंट बट आल्सो अ इंटरेस्ट कंपोनेंट। मतलब योर इन्वेस्टमेंट इज आल्सो डिपेंड अपॉन योर investment,
is also depend upon your investment. Yes or no? This is your interest rate, and small b will tell you the degree of responsiveness. It will tell you interest responsiveness of इन्वेस्टमेंट डिमांड. मतलब आपके इंटरेस्ट में चेंज आने से आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है, ये कौन बताएगा आपको? स्मॉल बी. स्मॉल बी विल टेल यू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है. And what this minus sign shows, why they have written this minus sign? Because there is a negative relation between investment and interest rate. That is when interest rate increase, your investment will decrease. Yes, अगर बैंक आपसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, you will borrow less. When you will borrow less, you will invest less. Similarly, when bank will charge you less rate of interest, अगर बैंक आपसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आप बोरो ज्यादा करोगे. आप बोरो ज्यादा करोगे तो आप इन्वेस्ट क्या करोगे? ज्यादा. इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव साइन लगा है. विशाल, समझ में आ रहा है? तो if I draw this graph, हाँ यस सर, मतलब थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है सर? मैं लास्ट क्लास किया ही नहीं था. तो लास्ट क्लास से इसका कोई लिंक नहीं है बच्चे. लास्ट क्लास में तो मैंने रिवाइज कराया सर. मतलब प्रीवियस सेमेस्टर में मतलब थोड़ा बहुत ऐसा क्लास वगैरह नहीं किया तो ऐसे. बच्चे ऐसे कैसे होगा? बच्चे केशव यस सर. समझ आ रहा है? यस सर. यश, आर्ची, यस सर. ईशु, समझ आ रहा है? नकुल, यस सर. प्रिया. यस सर. Since rate of interest and investment has negative relation, then your investment curve should be downward sloping. Why? Because let's say when your rate of interest is I naught, your investment was this. Suppose your हाँ बच्चे, sorry. So when your rate of interest increase, your investment decrease, and when your rate of interest decrease, Investment increase. so this is why your investment curve will be what? Downward sloping. If we include this component of rate of interest. Yes? Okay. ये देखिए, ये ग्राफ, ये था वो ग्राफ. डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है. ठीक है, ये इक्वेशन है जो रीडिंग में लिखी हुई है आपकी. ठीक है, आगे चलो. सी हो गया, आई हो गया. 3 सेक्टर में आने से सी और आई में कुछ चेंजेस आ गए हैं.
For sake of simplicity, I will take my government investment, government spending as autonomous. जैसे हम 2 सेक्टर में I इक्वल्स टू I बार लेते थे, अब हम G इक्वल्स टू G बार ले रहे हैं. तो 3 सेक्टर में हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हमने क्या माना है, अज्यूम किया है ऑटोनोमस. तो मेरी फंक्शनल फॉर्म चेंज हो गई है. क्या हो गया है, 3 सेक्टर में कंजम्पशन बन गया है C बार प्लस स्मॉल c 1 माइनस TY, where small t is your tax rate, small c is your MPC. I हो गया है I बार माइनस BI. B is your effect of interest rate on I, और G को हम ले रहे हैं G बार. इतना क्लियर है सबको? हाँ जी सर. Now let me write your AD. AD is C plus I plus G. C is what? C bar plus small c 1 minus T Y. I is what? I bar. And G is what? Sorry, I is not only I bar. I is I bar minus I BI. minus BI plus G is what? G bar. मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं. Yes. Yes. Can I write is C bar, I bar, G bar ऐसे, and then मैंने सारे ऑटोनोमस पहले लिख लिए हैं 1 minus TY and BI. कोई दिक्कत? No sir. Can I write these all autonomous variable as A bar, the sum of all autonomous variable, plus small c 1 minus TY minus BI? Yes. This is your AD in 3 sector economy when your investment has this interest component as well. Yes or no? Yes. Yes sir. आई होप ये इक्वेशन आपकी क्लियर हो चुकी है रीडिंग की. ये ग्राफ आपका क्लियर हो गया है. सी दिस इज योर एडी इन 3 सेक्टर मॉडल विद इंटरेस्ट रेट कंपोनेंट एज वेल. यही बताया मैंने आपको. हाँ है ना? सर ठीक है. ये भी 4 सेक्टर का लिख दिया इन्होंने. अभी मैं और वो करूंगा, डोंट वरी. अभी ये 3 सेक्टर करा रहा हूं. आगे चलते. लेट मी डिराइव एडी कर्व फॉर यू. अच्छा वैसे एक और है. एक तो हो गया ये. एक और चीज है. इफ वी इंक्लूड ट्रांसफर ऑल्सो, दैट इज TR बार. अगर मैं ट्रांसफर भी इंक्लूड कर लूं, इफ आई इंक्लूड ट्रांसफर एज वेल separately, then your consumption will become C bar plus small CYD, that is small C bar plus small c income minus taxes plus